Hello, students. Hello, students. Hello, everyone. Welcome to all of you in the FFB Live Chemistry class. तो इस वक्त तुम लोगों का केमिस्ट्री इस टाइम तुम लोगों का केमिस्ट्री क्लास चल रहा है जिसमें कि हम चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि तुम्हारे कोर्स का है उसमें डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की है पिछली क्लास में जिसमें उसमें उसकी केमिकल बिहेवियर फिजिकल प्रॉपर्टीज और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो भी उसकी बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हमने सेकंड ग्रुप के में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका जो इम्पोर्टेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से एक मेटल लिया है कैल्शियम और कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे So now today's topic is compounds of calcium. This is the part of S block element chapter. Now this is my YouTube channel FFB Live Chemistry class 11th and 12th. So please subscribe the channel and read all the chapters connected with the 11th and 12th of the chemistry subject. Now, today's topic is compounds of calcium. Quick lime, slag limes, and lime water. This is the important compounds of calcium. Limestone found in nature is the starting material of almost all the compounds of calcium. Calcium oxide is also called quicklime or burnt lime. It is obtained on large scale by heating limestone, which is chemical formula is CaCO3, and it is called calcium carbonate in specially designed kilns. The decomposition of calcium carbonate is a reversible process. हीट करने पे ये डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है The reaction moves towards right hand direction if CO2 formed is immediately removed from the kilns by allowing a blast of air to enter the kilns through fire boxes. The temperature for the decomposition of limestone, this is limestone, should be near about 1000 degrees centigrade. Otherwise, at higher temperature, the clay present in the limestone is impurity will react with it to form silicate. When water is added to lime, a hissing sound is produced along with clouds of steam. In this process, a large amount of heat energy is given out. The lime cracks with the formation of a powder called slag lime, that is CaOH whole twice. Chemical name is calcium hydroxide. The quick lime is a calcium oxide, reacts with water to form slag lime, that is calcium hydroxide, and produce energy. The process is known as slaking of lime. The paste of lime in water is called milk of lime, while the filtered, while the filtered and clear solution is known as lime water. Chemically, both are calcium hydroxide.
Uh, Calcium oxide is a white amorphous solid. This is calcium oxide. It is a white amorphous solid. It has a high melting point, that is 2600 degree centigrade. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and reacts with carbon dioxide. It absorbs moisture and reacts with water to form calcium hydroxide, and calcium oxide also reacts in carbon dioxide to form calcium carbonate. Being a basic oxide, it combines with acidic oxide at high temperature. Calcium oxide reacts with silicon oxide and forms calcium silicate. इसी तरह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट. नाउ लाइम पूरा प्रोसेस क्या है जो अब तक पढ़ा. लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में. इसका रिएक्शन H2O से होता है, स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. फिर ये आगे वाट सस्पेंडेड इन वाटर में जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो सस्पेंशन कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और फिल्टर करने पे हमें क्लियर सॉल्यूशन दैट इज लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. Quicklime is a commercial compound being used in various chemical industries as caustic soda, purification of sugar, manufacture of dyes, tough bleaching powder, calcium carbide, calcium salt, mortar, cement, glass, etc. Other use of quicklime is as it has high melting point, it is 2600 degrees centigrade, it is used for furnace lining. It is used as basic flux in metallurgy as it combined with acidic impurities. This is the reaction. It is used as a disinfectant and germicide as a drying agent for ammonia and alcohol. It is employed for the purification of coal gas and softening of water. Now, slag lime and lime water. Calcium hydroxide is a white amorphous powder. It is sparingly soluble in water. The clear aqueous solution is known as lime water and the suspension is called milk of lime. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of calcium carbonate. When calcium hydroxide reacts with carbon dioxide या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते हैं जैसा कि प्रैक्टिकल में करते हो तुम लोग कार्बोनेट के, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें पास करते हैं तो ये कहाँ किसमें बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट. On passing excess of carbon dioxide, milkness disappears due to formation of soluble calcium by carbonate. यानी excess of carbon dioxide जो भेजी जाती है कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाता है जो कि कलरलेस हो जाता है. Slag lime reacts with chlorine and forms bleaching powder. तो slag lime calcium hydroxide reacts with chlorine to form calcium hydroxide. तो सभी को पता है कि जैसे कि जिसको हम जनरली चूना बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चूने का पानी भी इसको हिंदी में बोलते हैं. इसका यूज एज ए जर्मीसाइड किया जाता है, जगह जगह इसका छिड़काव किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है हार्मफुल वो मर जाए. Now uses. Slag lime is used in the preparation of mortar, building materials. Slag lime suspension is used for whitewashing as it has disinfectant property. Slag lime is used for the manufacture of bleaching powder in the purification of sugar and in glass making. Now mortar. Slag lime is mixed with 3 to 4 times its weight of sand.
The mixture is made into thick paste with gradual addition of water. This paste is called mortar and is used in building construction. Now see again, slag lime is mixed with 3 to 4 times its weight of sand. The mixture is made into a thick paste with gradual addition of water. This paste is called mortar and is used in building construction. It sets to hand mass by loss of water and gradual absorption of carbon dioxide from the air. Sometimes coal ash is mixed with the lime instead of sand. A mortar obtained from hydraulic lime is called hydraulic mortar. It has greater strength and it used for construction of bridges. तो यहाँ ये डायग्राम दिखाया लाइम स्टोन यहाँ पे है और इसका जो क्या है कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन किल द सेपरेट फीड पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे लाइम स्टोन रखते हैं, उसको हीट अप किया जाता है तो यहाँ से हमें जो वेपर्स मिलते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं, मोर्राड बनाने का पूरा ये प्रोसेस है, डायग्राम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें मिलता है क्विक लाइम कहलाता है। उसके वेरियस फंक्शन क्या है वो यहाँ पे इस चार्ट पे दिखाए गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ मिक्स करके हीट करते हैं। हीट इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये फर्नेस में हीट किया जा रहा है at 2000 degree centigrade. The reaction is calcium carbonate plus coke, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो यहाँ पे बन रहा है इस प्रोसेस में, जब इसका रिएक्शन करते हैं H2O से तो बनती है एसिटिलीन और दूसरी तरफ जब नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम साइनाइड और कार्बन मिलता है, जिसका H2O से रिएक्शन करने पे हमें अमोनिया मिलती है। और ये कैल्शियम साइनाइड नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर एज ए यूज है नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। अब दूसरा रिएक्शन यहाँ पे ये कोक के साथ रिएक्शन हो गया। अब ये जो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसको क्विक लाइम कहते हैं, वाटर से रिएक्शन करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग लाइम कहते हैं। अब इनका अलग अलग रिएक्शन होता है तो क्या क्या कंपाउंड बनते हैं। अमोनियम से रिएक्शन होता है तो ये अमोनियम कंपाउंड से रिएक्शन होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा वाटर में डिसॉल्व किया तो मिल्क ऑफ लाइम वाइट वॉशिंग बनती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर कहलाता है। फॉर द डिटेक्शन फॉर CO2 इसका यूज होता है। क्लोरीन से रिएक्शन करके ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कास्टिक सोडा NaOH बनाता है और सिलिका से रिएक्शन करता है 1 पार्ट प्लस 3 और 4 पार्ट्स। 1 पार्ट क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 3 या 4 पार्ट सिलिका लेते हैं और वाटर मिलाते हैं तो मोर्टार, जिसके बारे में अभी बताया, बिल्डिंग मटेरियल होता है ये। और अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका अगला रिएक्शन जैसे कि स्लैग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्स। ये मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। इट इज गुड एब्जॉर्बेंट फॉर नंबर ऑफ गैसेस। तो ये पूरा एक चार्ट के माध्यम से कैल्शियम ऑक्साइड के डिफरेंट रिएक्शन और उनके यूज दिखाए गए हैं। The second compound of calcium is calcium carbonate, that is CaCO3. हेलो, हाँ और हाँ नहीं हमें चाहिए नहीं अभी। ओके ओके।
Yes. Now, calcium carbonate. It is found in nature in huge quantities in various forms such as limestone, marble, chalk. ये सब सारी चीजें क्या है? Calcium carbonate. It can be obtained by passing carbon dioxide through lime water or by adding sodium carbonate solution to calcium chloride. Reaction is here. Calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate and water, and calcium chloride reacts with sodium carbonate to form calcium carbonate and common salt NaCl. The precipitate of calcium carbonate thus obtained is known as precipitated chalk. It is white powder insoluble in water. It dissolves in presence of carbon dioxide due to formation of calcium bicarbonate. वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनता है. It breaks up at about 1200 Kelvin, giving quicklime and carbon dioxide. It reacts with dilute acids and liberates carbon dioxide. Now, calcium carbonate, when heated at 1200 Kelvin, it forms calcium oxide and carbon dioxide. And when this reacts with sulfuric acid, is formed calcium sulfate, carbon dioxide, and water. When reacts with HCl, it forms calcium chloride, carbon dioxide, and water. Now, uses of calcium carbonate. Precipitated chalk is known as calcium carbonate, is used in the toothpaste and face powder in medicine for irrigation, in adhesive, and in cosmetics. Chalk is used in paints and distempers. Marble is used for building purpose in the production of carbon dioxide in laboratory. Limestone is used in a manufacture of quicklime, slackline, cement, washing soda, and glass as a mixture in the some melting of iron and lead ores. Now, another important compound of calcium is calcium sulfate or gypsum, CaSO4.H2O. This is hydrated calcium sulfate known as gypsum. It is found in nature as anhydrous calcium sulfate, and gypsum is two types. It is found as two types. First is anhydrous calcium sulfate, and second is a gypsum, the molecular formula calcium sulfate 0.2H2O. It can be prepared by reacting any calcium salt with either sulfuric acid or soluble sulfate. Calcium chloride reacts with sulfuric acid to form calcium sulfate, and calcium chloride reacts with sodium sulfate to form calcium sulfate and NaCl. It is white crystalline solid. Properties of gypsum or calcium sulfate. It is white crystalline solid. It is sparingly soluble in water, and solubility decreases as temperature increase. It dissolved in dilute acid. It also dissolved in ammonium sulfate due to formation of double sulfate, that is Na2 whole twice SO4 CaSO4.H2O. Now, gypsum, when heated, first changes from monoclinic form to orthorhombic form without loss of water at 126 degree, at 120 degrees centigrade. It loses three-fourths of its water of crystallization and forms hemihydrate 2CaSO4 point H2O, which is commonly known as plaster of Paris. This is plaster of Paris. When gypsum is heated at 120 degrees centigrade. At 200 degrees centigrade, it becomes anhydrous. The anhydrous form is known as burnt plaster or dead plaster. When strongly heated, it decomposes to give calcium oxide. This is gypsum monoclinic, that is CaSO4.2H2O. When heated, it forms calcium sulfate and it's CaSO4 2H2O. This is a orthorhombic
gypsum reacts with H2O, it forms again gypsum. When this orthorhombic gypsum heated to form plaster of Paris, this is एक वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसको हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो इट लूजेज H2O एंड फॉर्म्स एनहाइड्रस बर्न प्लास्टर। And when heated strongly, it gives lime, calcium oxide, sulfur dioxide, and oxygen. Now these are the reactions. Calcium and gypsum heated to forms plaster of Paris and H2O. And plaster of Paris when heated 200 degrees centigrade is converted into calcium sulfate and H2O. Calcium sulfate when strongly heated forms calcium oxide, sulfur dioxide and oxygen. A suspension of gypsum when saturated with ammonia and carbon dioxide forms ammonium sulfate, a nitrogenous fertilizer. NH3 calcium sulfate और कार्बन डाइऑक्साइड के सोल्यूशन में एक साथ रिएक्शन करते हैं ये तो बनाते हैं अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। When strongly heated with carbon, it forms calcium sulfide. कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट्स विद कार्बन, हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नाउ यूज ऑफ कैल्शियम सल्फेट, it is used for the manufacture of plaster of Paris, cement, ammonium sulfate, sulfuric acid, etc. For preparing blackboard chalk, it is used in the for the preparing of blackboard chalk and also used in anhydrous forms of drying agent. Now plaster of Paris, अभी पढ़ा था कि जिप्सम को जब हीट करते हैं तो वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाता है तो हमें जो मिलता है कंपाउंड वो कहलाता है प्लास्टिक plaster of Paris and chemical name is calcium sulfate hemihydrate। और जब यहाँ पे 2H2O होता है तो ये होता है हो जाता है जिप्सम। नाउ प्रेपरेशन, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज हीटेड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज जिप्सम CaSO4.2H2O। When heated at 120 degree centigrade, it converted into plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate plus 3H2O. Now properties of plaster of Paris. It is a white powder. It has the property of setting to a hard mass when a paste with water is allowed to stand aside for some time. Slight expansion occurs during the setting as water is absorbed to reform calcium sulfate hydrate jet, which is a gypsum. The setting process is exothermic. The process of setting takes place in two stages. In the first stage, there is conversion of plaster of Paris into orthorhombic form of gypsum, and in the second stage orthorhombic form changes into monoclinic form, जो अभी एक रिएक्शन दिखाया था। इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर जब इसके साथ मिक्स करते हैं तो सेटिंग होती है, या आर्थोरोम्बिक जिप्सम में बदल जाता है, फिर हार्डनिंग इसकी चलती रहती है और मोनोक्लोरिक कैल्शियम सल्फेट यानी डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बी कैटेलाइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड while it is retarded by borax or alum. Addition of alum to plaster of Paris make the setting very hard. The mixture is known as King's cement. When plaster of Paris is heated at 200 degrees centigrade, it forms anhydrous calcium sulfate, which is known as dead plaster. It has no setting property as it takes up water only very slow. Now, use of plaster of Paris. It is used in surgery for setting broken or dislocated bones,
It making cast for status, toys, surgical instrument, etc. It is used in making cast in dentistry. It makes blackboard, chalk. Now Portland cement. Cement is one of the most important building materials at the present time. It is used in construction of buildings, roads, bridge, dam, etc. It was discovered in 1824 by an English mason, Joseph Astin, who observed that when strongly heated mixture of limestone and clay was mixed with water and allowed to stand, it hardened to a stone-like mass which resembled Portland rock, a famous building stone of England. Since then, the name Portland cement has been given to a mixture containing high percentage of lime with silica, iron oxide, alumina, etc. Now, cement is a dirty, grayish, heavy powder containing calcium aluminates and silicates. The silicates and aluminates, which forms more than 90% of the cement or इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है 3CaSiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO point Al2O3, tetra calcium aluminofferrite that is 4CaO Al2O3 Fe2O3. Of these tricalcium silicates, it's most important. Tricalcium sulfate is most important disease. Now, composition of Portland cement. The appropriate composition of Portland cement is calcium oxide होता है 61.5% and silica 22.5%, alumina N2O3 7.5%. It contains magnesium oxide 2.5%, ferric oxide 2%, potassium oxide K2O is 1.5%, sulfur trioxide 1%, and sodium oxide Na2O is 1.5%. The essential constituents are lime, silica, and alumina. These are generally kept in the following ratio. Percent of silica upon percent of alumina is 2.5 minus 4. That is percent calcium hydroxide upon percent silica plus percent of alumina percent of ferric oxide is 1.9 minus 2 minus 1. The cement, now the cement containing no iron is white. जिसमें आयरन नहीं होता वो वाइट सीमेंट कहलाती है यानी कि आयरन ऑक्साइड उसमें एडेड नहीं होता. Now raw material for the cement. The important raw materials needed for the manufacture of cement are limestone, this provide lime, clay, this provide alumina and silica, and gypsum. Now manufacture of cement. There are two processes in use for the manufacture of cement. First is dry process, second wet process. Dry process, the process is used when limestone is hard in nature. The limestone is first broken into small pieces. It is then mixed with clay in proper proportions. The mixture is finally pulverized to such an extent that it passes through 100 mesh sieves. This homogeneous mixture is known as raw mix. Now, second process is wet process. The process is used when limestone and clay both are soft in nature. The clay is washed with water in wash mill to remove foreign materials like flint. The powdered limestone is mixed with clay paste in the ratio of 75% limestone and 25% clay. The mixture is finally ground and made homogeneous. The homogeneous paste is known as slurry. It contains 40% water.
Now, calcination in rotatory kilns. This step is mainly responsible for the formation of cement. The heating of raw materials or slurry is done in rotatory kilns at a very high temperature at 14 to 1600 degrees centigrade. The kiln consists of a long cylinder 6 to 10 feet in diameter and 100 to 250 feet in length. It is made of steel and lined inside with fire bricks. This is the structure of this is the kiln. इस तरह से होती है ये पूरी रोटेटरी किल्न है ये. यहाँ से रॉ मटेरियल इसमें डालते हैं स्क्रू कन्वर्टर की मदद से और इधर ये चिमनी है गैसेस निकलती है यहाँ से. ये यहाँ पहुँचती है. उसके बाद यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर है इसका. कोल्ड डस्ट चैम्बर है, ये बर्नर है, ये एयर ब्लोअर है जहाँ से हॉट एयर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. हॉट एयर फ्रॉम कूलर, यहाँ से एयर मिलती है और ये ब्लोअर यहाँ से इसको हॉट करता है चैम्बर. ये डस्ट चैम्बर है. कोल्ड इनका डिस्चार्ज. अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है? द चार्ज इज इंट्रोड्यूस इन द किल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कन्वर्टर. यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा रॉ मटेरियल यहाँ से स्क्रू कन्वर्टर की मदद से इसमें किल में भेजा जाता है. Then it moves forward with the rotatory motion given to the kiln. The charge is heated by burning coal dust which is blown in the from the other side with the help of blower. This is the blower. In the upper portion of the kiln, the temperature is about 7 degrees centigrade, where whole of the moisture is eliminated. In the middle portion, temperature is 1000 degrees centigrade. The limestone decomposes with evolution of CO2. At the lower end, the temperature is 1600 degrees centigrade. Now the following reaction occurs in this process. Calcium carbonate is converted into calcium oxide and CO2. This calcium oxide reacts with silica to form calcium silicate, and calcium oxide forms with silica to form calcium silicate. दोनों ही रिएक्शन में calcium silicate बन रहा है. Then calcium oxide reacts with alumina to form calcium aluminate. Now CaO reacts with alumina and ferric oxide to form 4CaOAl2O3 Fe2O3. The product forms is technically called as clinker. This is the clinker. It is cooled and mixed with 2 or 3 of its weight of gypsum. It is then ground to an exceeding fine powder. The powder is packed with airtight bags. The purpose of the addition of gypsum is to increase the setting time of the cement. Now, setting of cement. When cement is mixed with water and left as such for the some time, it becomes hard mass. It is known as setting of cement. The exact mechanism of this setting process is not known. It is believed that various aluminates and silicates present in the cement form hydrates with water which separate in the form of gel. रिएक्शन इस तरह से होता है. कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कोलाइडल जेल. कोलाइडल जेल बनाता है. एंड दिस रिएक्ट्स सिलिका रिएक्ट्स विद वाटर आल्सो हाइड्रोजन होता है तो कोलाइडल जेल दोनों एक प्रोसेस में बनता है. अब ये जो तुम्हारा क्लिकर बना था वो वाटर से रिएक्शन करके कोलाइडल जेल भी बनाता है. साथ में आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है. At the same time, some calcium hydroxide and aluminum hydroxide are formed as precipitate due to hydrolysis. तो इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर से रिएक्शन करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है.
The gypsum combined with tricalcium aluminate to form calcium sulfoaluminate. This is gypsum calcium sulfate reacts with tricalcium aluminate and water to form calcium sulfoaluminate. This is known as calcium sulfoaluminate. Pura compound. This reaction slows down the setting. The gels formed start losing water partly by evaporation and partly by forming hydrate with hydrated constituents. This results in the formation of a hard mass. Calcium hydroxide binds the particles of calcium silicate together, while calcium hydroxide fills the interstices, resulting in hardening the mass. Setting of cement is an exothermic pressure process. Hence, cement structure have to be cooled during setting by sprinkling of water. Now, concrete. A mixture of cement, sand, gravel or small pieces of stone and water is known as concrete. ये देखा है सबने मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसेस जब होते हैं तो कंक्रीट बनाया जाता है इसमें ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है सीमेंट सैंड gravels or a small piece of stone water is known as concrete. It sets to an exceeding hard structure. It is mainly used for construction of floors. If the cement concrete is filled in and around a wire netting or skeleton of iron rods and allowed to set, the resulting structure is known as reinforced concrete. These structures have great strength and are used for construction of roofs, bridges, etc. Now, cement industries in India. Cement industries was started in India with establishment of first factory in 1904 in Tamil Nadu. India is the present one of top 10 cement producing countries in the world. There are about 60 cement factories in public and private sector producing near about 2.5 crore tons cement annually. Now difference between alkaline earth metal and alkali metals. Both alkaline earth metals and alkali metals are S block elements. At the last differentiating electron enters the ns orbitals. They resemble with each other in many respects, but still there are certain dissimilarities in their properties on account of different number of electrons in the valency shell, smaller ionic atomic radii, high ionization potential, higher electronegativity, etc. The main points of difference between alkali earth metals and alkaline earth metals are here. Now, electronic configuration में क्या difference है सबको पता है. Two electrons are present in the valency shell. The configuration of NS2 alkaline earth metal में होता है. And in alkali metal, one electron is present in the valence shell. The configuration is 1s1. Valency alkaline earth metals bivalent होते हैं जबकि alkali metals monovalent. Electropositive nature, these are less electropositive than the alkali metals. Hydroxide weak base होते हैं alkaline earth metals में less soluble and decompose on heating, but in alkali metals these are strong base, highly soluble and stable towards heat. Bicarbonates in alkaline earth metal, these are not known in free state. It is exist only in solution, but these are known in solid state also. Carbonates insoluble in water decomposes on heating in case of alkaline earth metal. In the alkali metals, these are any carbonates are soluble in water, do not decompose on heating. Action of nitrogen, alkali earth metal directly combined with nitrogen form nitrides, but alkali metals do not directly combine with nitrogen. Action of carbon, alkaline earth metal directly combined with carbon and form carbides, but alkali metal do not directly combine with carbon. Nitrate
Alkaline earth metal nitrate decompose on heating, evolving a mixture of nitrogen dioxide and oxygen. But alkali metal decompose on heating, evolving only oxygen. Solubility of salts, sulfate, phosphate, fluorides, chromates, oxalates of alkaline earth metal are insoluble in water, while sulfates, phosphate, fluorides, chromate, oxalate of alkali metals are soluble in water. Physical properties: alkaline earth metals comparatively harder and have high melting points and diamagnetic in nature. But alkaline earth metals सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट पैरामैग्नेटिक, क्योंकि s ऑर्बिटल में इनमें अनपेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन होता है. Hydration of compound of alkaline earth metal compounds are extensively hydrated, but the compounds of alkali metals are less hydrated. Now, reducing power. Alkaline earth metals are weak reducing agent, as ionization potential values are high and oxidation potential values are low, but alkali metals are a strong reducing agent as ionization potential values are low and oxidation potential values are high. And so this is the difference between alkali metals and alkaline earth metal. तो इस तरह से ये कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम इस चैप्टर में पढ़ा तुम लोगों ने. इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में जो होते हैं, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें देखी. अब आगे के क्लास में अभी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ही चलेगा जो है. तो इसमें जो जो दो एलिमेंट हैं, लिथियम और सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम, इनके कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं जो अपने ग्रुप से ये मिलते जुलते नहीं हैं, थोड़ा कम मिलते हैं. इनकी कुछ स्पेशल रिएक्टिविटी है, तो इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.